Well, let's take a look at how the pollution figures in the national capital. The air quality in Delhi remains in the very poor category. Delhi's air quality index was recording around 336, with some areas AQI even reaching around 400. This is the kind of situation that we are in fact seeing in Delhi, especially when it comes to the air quality index in the national capital, from around 336 to around 400 in certain areas. This is how the air is in Delhi, the AQI index saying that it is in the poor category. Well, in Anand Vihar, we can see it's around 392. Similarly, in certain areas, it's ranging from 336 to around 400 in certain areas. So clearly, the challenge of pollution remains, and as the winter sets in, we are in fact seeing rise in the pollution levels inside the city limits of Delhi NCR. Now, in response to those worsening air quality, the centre has implemented stage 2 of the Graded Response Action Plan, popularly known as the GRAP 2, introducing severe restrictions in certain areas. Meanwhile, various market association traders have reported a considerable increase in the sale of air purifiers as people seek to support a healthier lifestyle. Now, Delhi Environment Minister Gopal Rai wrote letters to the transport ministers of Haryana, Uttar Pradesh and Rajasthan, urging them to ensure no diesel buses from their states ply to the national capital in view of GRAP 2 restrictions in place. So we see this every year, and there is a lot of data. As a matter of fact, the report by the Health Effect Institute said in 2021, almost 8 million people in the world died because of air pollution. This is more than the number of people who have died due to COVID-19. We are very concerned about COVID, but we are not that concerned as we should be about air pollution. A lot of data suggests, and there is also data from our own country, India, in a recently published paper, that even just a 10 microgram per meter cube increase in PM 2.5 is associated with higher deaths. And this occurs because of respiratory and cardiac problem mainly. So people whose lungs are weak because of chronic diseases, air pollution causes more inflammation in the lungs, their respiratory problem worsens, they land up in the ICU, on a ventilator at times, and this leads to higher mortality. Similarly, people who have heart disease, heart failure, chronic coronary artery disease, it causes inflammation or swelling of the vessels of the heart, and this also leads to higher chances of heart attack. There is also data now emerging that it's not only the heart and the lung, but pollution can affect almost any part of the body, because these fine particles of air pollutants, less than 2.5 microns, and other chemicals, when they enter the body from the lungs, they can go into various organs. So they can lead to diseases which are have a long-term effect, like dementia, neurological problems, diabetes, metabolic syndrome. All of these have been linked to air pollution. नॉर्थ वेस्ट की तरफ हवा का रुख शिफ्ट करने का मतलब ये है कि जो हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर या उसके चारों तरफ जो पराली की घटनाएं हैं, अब उसका इम्पैक्ट दिल्ली पे ज्यादा बढ़ने की संभावना दिख रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से हमने डिपार्टमेंट्स को भी अलर्ट किया है कि जिस तरह से विंड स्पीड और डायरेक्शंस दोनों जो है वो चेंज हो रहे हैं, ऐसे में जो पराली का प्रभाव था धुएं का, वो आगामी 2-3 दिनों के अंदर और वो बढ़ सकता है। क्योंकि अब दिवाली भी नजदीक आ रही है, तो हमने डिपार्टमेंट्स को भी अलर्ट मोड में आज रखा है कि सभी लोग अपनी तैयारी रखें, और हो सकता है कि मौसम अगर और विपरीत होता है तो प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है। साथ ही साथ आज मैं पुनः केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को तीसरी बार आज चिट्ठी लिखने जा रहा हूं कि प्लीज एक बैठक तो बुला लीजिए, क्योंकि अब जो स्थितियां दिख रही हैं वो स्थितियां जो हैं प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने की स्थितियां दिख रही हैं। कल हमने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के परिवहन मंत्री को भी पत्र लिखा कि प्लीज जो डीजल की गाड़ियां हैं, कम से कम जब तक पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है दिल्ली में, मौसम विपरीत है, तब तक आप न भेजें। मुझे भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारें दिल्ली के लोगों के सांसों पे जो संकट है उसमें राजनीति करने की जगह सहयोग करेंगी, और हम सब प्रयास करेंगे
दिल्ली के लोगों से भी मेरा निवेदन है। अगर हम देखें पिछले साल के कंपैरिजन में सर्दियां कुछ जल्दी आ गई हैं, पहले दिवाली के बाद आने लगी थी। अगर हम 10 साल पहले देखें तो इसी टाइम विंटर शुरू हो गए थे। तो इस बार हम देखें बरसातें भी लेट तक गई हैं, और बरसात जैसे ही गई है तो विंटर्स आने लगी हैं। शायद विंटर्स के जल्दी आने से पोल्यूशन बढ़ने लगा है, क्योंकि विंटर्स से जो एयर होती है वो कोल्ड हो जाती है, नीचे सेटल हो जाती है, डस्ट भी नीचे सेटल हो जाता है, तो इट हैज़ इम्पैक्टेड द चिल्ड्रन, काफ़ी हद तक इम्पैक्ट कर रहा है ये। अगर हम कंपेयर करें पिछले एक महीना और इस महीने, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स पेशेंट्स आ रहे हैं। और जो मैक्सिमम पेशेंट्स आ रहे हैं, 2 तरह के पेशेंट्स हैं। एक है इन्फेंट्स जिनको ब्रोंकियोलाइटिस हो रही है, जिनके अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, जो कई बार ऐसा लगता है कि पोल्यूशन भी उसको ज़्यादा घातक बनाता है। और दूसरे जो मैक्सिमम पेशेंट्स आ रहे हैं जो ऑलरेडी दे आर सफरिंग फ्रॉम एस्थमा, जिनके अंदर एस्थमा है, एलर्जी है, ऑलरेडी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, उनकी जो डिजीज़ है वर्सन कर गई हैं पहले से मुकाबले। मीन्स अगर हम जितने पेशेंट जून जुलाई में बिल्कुल सेटल्ड थे, जिनके एस्थमा के जो इन्हेलर से ऑलमोस्ट बंद हो गए थे, हमें रीस्टार्ट करने पड़े। Meanwhile, the number of stubble fires in Punjab and Haryana has decreased since a record peak in 2021, but the numbers remain high enough to severely impact the air quality every winter. The Punjab and Haryana collectively dispose of around 28 million tons of paddy straw during the Kharif season. Stubble burning actively was intense in 2020 and well as in 2021, but fire counts started to decline in 2022 and 2023, likely due to improved management practices for favorable weather conditions. The Punjab's fire counts dropped from 95,048 in 2020 to 52,722 in 2023. Haryana's fire counts reduced from 14,122 to 2019 to 7,959 in 2023. While most districts in Punjab saw reductions, Haryana experienced fluctuating trends. Some districts saw significant decreases, while southern districts like Gurgaon and Bhiwani saw an increase. In Punjab, Gurdaspur, Hoshiarpur, Muktsar and Patiala recorded the highest reductions in stubble fires. However, districts like Amritsar, Sargur and SAS Nagar saw only minor reductions. Stubble burning continues to be a significant contributor to Delhi's toxic air during winter, with its share in air pollution peaking at 30 to 35% in November. With 85% of the farmers being small and marginal, experts say eliminating stubble burning entirely is nearly impossible task. While some districts showed significant improvements, stubble burning remains a persistent problem.